أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My dear respected brothers and sisters, the most famous hadith of Jibreel alayhi salatu wassalam we are all familiar with. Our Prophet sallallahu alayhi wasallam was first asked 3 questions. Right? What is Islam? Mal Islam? Mal Iman? What is Iman? And what is Ihsan? Right? Then at the very end, the final question that Jibreel alayhi salatu wasalam asked him was, what are the signs of the day of judgment? Right? Our Prophet sallallahu alayhi wasallam, he responded that you shall find slave girls giving birth to their masters, and you shall find shepherds that are barefooted and will be able to build tall buildings, and they will be competing with each other to build these tall buildings. Right? So in this famous hadith of Jibreel alayhi salatu wasalam, the last paragraph is about the signs of the day of judgment. And the fact that this question is included in this hadith indicates the importance of this subject. Right? The importance of the signs of the day of judgment. Right? What did Jibreel alayhi salam ask? Why did he ask these questions? What is the relevance of these questions? Why we as Muslims should care and have concern about the signs of the day of judgment. Right? First and foremost, when we study and learn these signs, we understand how close the day of judgment is. Right? Today we say, oh, the day of judgment is still a long time to go. Right? That's what we think. And that's what we predict. We say, oh, the day of judgment is a long time. Now why? Because these signs haven't occurred yet. Right? We said this sign, that sign, this sign, has not occurred yet. But in reality, the day of judgment, my day of judgment,
Your day of judgment is at the death, at your last breath. Right? When you breathe your last, and when you are put into the grave, your judgment day has started. Right? SubhanAllah. But the signs of the day of judgment are such that, when we read in the Quran, when we ponder upon these, we will understand that we are far more closer to the day of judgment compared to the previous nations. And we will realize that no, this time is going to come. It's a reality, and it's something that we need to understand. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in so many places in the Quran, اقتربت الساعة وانشق القمر. The day of judgment is so close. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. The judgment day and hisab is drawing closer to us, but we are unaware and blind from it. We are oblivious from it, right? And we are blind from it. The second point is, when we understand how close the day of judgment is, what will we do? Right? We will prepare for it, exactly. Definitely we'll prepare for it. Just like a person is told that you only have, may Allah protect us, may Allah give us, health, keep us healthy, protect us from any kind of sickness, where the doctor tells somebody that you only have 6 months left. Right? And the doctor says that to somebody, what's that person going to do? He's going to, make sure every minute, every second of his time, every week, every month, he's going to spend it wisely. Right? He's going to spend it wisely. In the same way, when we know about the signs of Qiyamah, when it's going to come, we don't know. But how these signs which come before it, they are indications that it is close, right? Then we will prepare for it. The third point is that by studying the signs of Qiyamah, our iman will increase, right? Our iman will increase. Our iman in our faith will increase. It's one thing to believe, and it's another to really believe. Right? One thing to believe and one thing to really believe. Ibrahim alayhi salatu wassalam, what did he say? إذ قال إبراهيم ربي الذي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Right? How do you, oh Allah, how do you recreate the dead? قال أولم تؤمن? Don't you believe? Say, yes, I believe. ولكن ليطمئن قلبي. Right? But I want the contentment of the heart. I want to believe, I want to see it. Right? So Allah subhanahu wa ta'ala tells him to, get 4 kinds of birds and slaughter them and mix all the meat together and then put some on this place, here, there, every, different places, right? And Allah subhanahu wa ta'ala gathers them together. Allah gathers them together and He creates them, gives them life again. Then He says, subhanAllah, see, believing in one thing and then seeing, then that increases one's iman. And, right, that is the purpose, where when we know the signs of Qiyamah, then we will believe more, we will increase our belief, right? We know this, but seeing is believing in it. The 4th point is that these signs will console us. By us seeing them happen, we will understand that whatever is happening
has been foretold by Allah subhanahu wa ta'ala through our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Right? And it is going according to the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, and we don't know the wisdom behind it, but the fact that He has told us about these predictions calms us down. Calms us down, that we don't need to worry, because these are the signs of Qiyamah which are going to happen. Right? And these points make it important for us to study and understand the signs of the Day of Judgment. Rasulullah emphasized the signs of Qiyamah in many ahadith. Right? And my purpose of doing this and highlighting the signs of Qiyamah is that, one of the signs of Qiyamah, the major signs, come to that, in a little while, where, Isa alayhi salatu was salam, the coming back of Isa alayhi salatu was salam, which inshallah on the 20th we are going to have a talk about that, right? So these are some of the major signs. So anyway, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, Abu Zayd radiallahu ta'ala says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sat down on the pulpit after the Fajr prayer and began to deliver a long khutbah, right? A long speech. And how long? Until the time of Dhuhr, right? And he performed Dhuhr and he continued the khutbah, continued the speech until the time of Asr, right? After the Asr prayer, he resumed the sermon, so much so that until the sun set, he started, he continued to talk about the detailed incidents that will happen before the Day of Judgment, the incidents that happened in the past, right? And can you imagine how mesmerized they were by his words, that the entire day they didn't go away from the masjid, right? They sat after every salah listening to the speech of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He related what was going to happen in the past. He related in detail what is going to happen in the future. Those amongst us who had good memories retain many things, right? And one Sahabi, Huzaifa ibn Yaman, says that I didn't remember everything at that time, but whenever an incident happened, I remembered, Allahu Akbar, that our Prophet sallallahu alaihi wasallam had told us about this, had warned us about this, and exactly like he had mentioned, that incident had happened. And now the signs of Qiyamah we can categorize in two groups. One is the major signs, right? The major signs, and one are the minor signs. The major signs will come one after the other. One after the other, they will come. Just one sign will come, the next will be waiting. The next will come, the next will come, like this. So, in the hadith narrated by Huzaifa ibn Asad al-Ghifari, that the Prophet ﷺ entered our gathering whilst we were engaged in conversation and inquired as to the subject of the talk. We replied, we are talking about Qiyamah. The Prophet ﷺ replied that it will not come to pass until 10 signs appear, right? One after the other. He then mentioned the signs. One is the dukhan, the smoke, right? Then the Dajjal, right? The Messiah. And then Dabba, the beast, right? That will converse with people, right? It will be such a beast that will converse with people. The rising of the sun from the west,
right? The descent of Isa alayhi salatu wassalam, right? And this is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unfortunately nowadays we get so many, different people, talking about this issue in such a way that, it's not mentioned in the Quran, and it's not mentioned here, it's not mentioned here. It's clearly mentioned in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala, right, elevated Isa alayhi salatu wassalam, right? Allah subhanahu wa ta'ala elevated him and saved him from being crucified. Right? Allah subhanahu wa ta'ala says, right, that بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. We didn't kill him, we didn't crucify him, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Somebody else was. His face was changed by the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala into the face of Isa alayhi salatu wasalam, and he was crucified. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah says, we elevated him. And inshallah, in that halaqah, family night, you can say, on the 21st, I believe it's 21st, 20th or 21st, inshallah we'll announce that after the salah. We'll mention about that and we'll talk about that, right? So, and the appearance of Yajuj and Majuj, right? The sinking of the earth in 3 places, and the last being a fire will break out in Yemen. These signs will come one after the other, right? But today we are going to mention a few minor signs in the time that we have, right? The first one is the appearance of fitan, tribulations, removal of khushu, God-fearing, taqwa, reverence, etc. in one's salah. Right? The khushu, it's mentioned, right? A time will come that the entire masjid will be full, right? But there will be hardly anyone with khushu in their salah. So increasing that khushu in our salah can be a way of delaying the sign of Qiyamah, right? So we have to increase the khushu in our salah. Right? Something that we need to work on. Sometimes we know the condition of our salah. When you say Allahu Akbar, what do we remember? We remember everything outside salah, nothing in salah. And the condition of the Sahaba was such, right? They would think that Jannah is on their right. This is mentioned about a tabi'i, actually, not even a Sahabi, a tabi'i. That he would think that Jannah is on one side, Jahannam is on the other. He is standing on the bridge of Sirat, and Malakul Maut is just on top of his head. Right? As I mentioned, if somebody said that you are only going to live 6 months, or a week or 2 or a month, how much we would be devoted in our ibadah towards Allah subhanahu wa ta'ala. That yes, I don't know, I might die today. I don't know, I've got this illness and I might pass away. Let me read my last salah with khushu. Right? That's why it's mentioned. Like when we say, straighten your rows, right? And stand shoulder to shoulder. And the last thing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say, that read your salah as if it is your last salah. Read your salah as if it is your last salah. Right? So, that is very important. A messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned that عن أبي درداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيه خاشعا. That the first thing that will be uplifted from the ummah is the khushu in salah, and you will not find anybody
who will have khushu, right? Who will have khushu. The other signs which have passed, right, which are minor signs of Qiyamah, one is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, him coming into the world. That was one of the minor signs as well. Then the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's also a minor sign. The conquering of Jerusalem by Muslims. This happened during the Khilafah of Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. The plague of Emirs, this took place in 639 CE during the time of Khilafah of Umar radiallahu ta'ala as well, and claiming the lives of many companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Extreme wealth to be point where charity is not needed, right? Extreme wealth, that they had wealth in abundance. This also took place during the time of the Khilafah of Umar radiallahu ta'ala anhu, when the Muslims had so much wealth that there was no one to give sadaqah or zakat to, right? The emergence of major tribulations and upheavals. These tribulations include, but are not limited to, the assassination of Khalifa Uthman radiallahu ta'ala anhu, the battle of Camel between Ali and Aisha, the war between Ali and Muawiyah, the death of Hassan ibn Ali, Hussein ibn Ali, and the siege by Hajjaj ibn Yusuf and the city of Medina. These were all trials and tribulations. These are also the signs of Qiyamah. And these are minor signs. Again, there are so many signs I can mention, right? But again, this is something for us to understand, that Qiyamah and the Day of Judgment is not a myth. It's not something that we can say it's a long time to go yet. It's not something that we can say, oh, there's so many, I don't know when it's going to come. We don't know when it's going to come. But the signs are such that we are seeing with our own eyes, right? We are seeing with our own eyes, right? Loss of knowledge, Islamic knowledge, an increase in earthquakes, an increase in killings. All these are minor signs that we are seeing today, right? And as I mentioned, we may think Qiyamah is a long way to go, but Qiyamah is when a person dies. His Qiyamah has started. His Day of Judgment has started. His hereafter has started. When we pass away, when we depart from this world. So my dear respected brothers and sisters, let us understand that. And as I mentioned earlier, my purpose of doing this is that one of the major signs that is going to occur, as I mentioned, that these signs are going to come one after the other, is the descent of Isa alayhi salatu wassalam. And inshallah we are going to have that halaqah on the 23rd of December, inshallah ta'ala, between 8 and 9. Inshallah, so brothers and sisters are requested to participate in that. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة مضافرة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا. آمين آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، إقامة الصلاة إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah. You stretch your lines, put your heels on the line, stand shoulder to shoulder. Inshallah, if you can bear with me a few minutes after the prayers, I have a few announcements. Jazakallahu khair. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Inshallah, dear brothers, Alhamdulillah, you probably received emails about and the newsletter and the different announcements and the programs that we are doing. First of all, inshallah, we have a community town hall December 14th after the Isha prayer. And inshallah, we are open forum to discuss what you are looking for from your masjid. And, one of the perks is that refreshments will be served. Okay. That's tomorrow, yeah, that's tomorrow, inshallah. So please, we want all of you to be here. And mashallah, we have a lot of people living in the vicinity of this masjid, right? But unfortunately, it doesn't matter how big the masjid is or how small the masjid is. Masjid al-Nabawi, this is the example of Masjid al-Nabawi, that it was even smaller than this. But the anwarat, the benefits, and the rahmah and the effects of Masjid al-Nabawi spread in the four corners of the world, right? So please try to be here, and at the same time, one thing I'm going to mention afterwards is, populate your masjid, inshallah. Second thing, inshallah, as I mentioned, 23rd of December, between 8 and 9 p.m., meaning after the Isha prayer, we'll be talking about Isa alayhi salatu wasalam.
So that is also a program on the 23rd of December. And then January 4th, between 7:45 and 9 p.m., we will have Mufti Wasim Khan doing a program, the building blocks of trust. Inshallah, that's also a program. And then Sunday, January 19th, 5 to 7 p.m., Imam Azhar from Plano Masjid will be doing the holistic lifestyle coaching. Inshallah ta'ala, that's the program. You need to sign up for that, inshallah. And then every week on a Tuesday, after Isha, we have tafsir of Surah Mulk, right? That is going on. Inshallah, participate in that. And at the same time, don't forget to give your dues towards the masjid, right? This masjid, through the help of Allah subhanahu wa ta'ala first, and through your help, right, it will continue to function. We'll be able to do programs. Sign up for a monthly amount, whatever it is. I'm not going to say this much, that much, but what you have according to your ability. When we look at the blessings and the ni'mah that Allah has bestowed upon us, right, comparing that and giving a certain amount on a monthly basis to our masjid, right, so that we can increase programs, we can do more things, and at the same time populate this masjid, right? I'm here Sunday, Fajr and Isha, right? I'm here Sunday, Monday and Tuesday, Fajr and Isha in winter. In summer, inshallah, I'll be here, Fajr, Maghrib and Isha, right? But when I come sometimes, it's very sad. I only see one person, two people, handful, 5 people. SubhanAllah, I heard just not even 2 miles away, a subdivision, there is over 100 families there, right? We have the big masjid, mashallah, ICF, yes. Alhamdulillah, we go there. But if we are close to this masjid, it's very important we populate this masjid for, everyday salah, and try to come once a day. At least once a day. I understand between the working hours we are busy, right? But please populate this masjid, right? We should find Fajr and Isha, different salah, full. And weekends as well. Weekends, we bring our children, bring our families, right? We can populate this masjid and be as one family, right? And as we mentioned before as well, humble beginnings that we create right now will go a long way as we grow as a community and as space as well, inshallah. So we pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives us the ability. And please remember these dates. And, every first Sunday of every month, we have a breakfast here after Fajr. So inshallah, try to participate in that and bring things. And all these programs, there will be food. I will make sure about that. There will be food, right? Either it's actual food or the food for the soul. Jazakallah.
Yeah, like a Super Bowl champion. That's what Liverpool.
गाड़ी कम चलेगी बेचारी। ठीक है गाँव में आ जाओ। क्या इसकी उसमें है ना जी तो वो कैपिटल वन। अच्छा ये कैपिटल वन है। हाँ कैपिटल वन में है। तो मैंने चेक किया तो मेरे ऑफिस तो ठीक है भाई। कभी कभी लंच में रिजेक्शन में कहीं भी किसी जगह और मस्जिद INT 3 जुमा भी हो गया। चलो ठीक है चले चले इंशाल्लाह। तो वो भी हो गया आराम। बहुत अच्छा हाँ भाई बहुत ही अच्छी हो गई। तो बस अब काम शुरू करना है। 6 तारीख को जाऊँगा तो मैं बम फोड़ूंगा। दो हफ्ते बाद मैं जा रहा हूँ। आना जाना रोज की 2 साल कंप्लीट हुआ तो मैं शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है। विंटर में जाते थे खारपुर काफी गाड़ी रोज नहीं चलती। हफ्ते में 1 दिन चलती थी। 4 दिन आप सो के जाते थे। हाँ तो भाई रोजा रमजान में मैं वहाँ से निकलता था 5 बजे। बेगम को फोन करा डायरेक्ट तो मैं बात करते हो वरना सुनूंगा। क्योंकि कभी नहीं बात किया तो बाहर गर्मी और AC चल रही है ठंडी ठंडी हवा तो आदमी तो फौरन नींद आ रहा और नींद पूरी नहीं और आप बैठे हैं कंफर्टेबल बहुत तो क्योंकि मैं वो याद है मैं ब्लूमिल्टन में जानता हूँ लड़के तो हिंदी थे। रमजान में है ना वापसी में मुझे चलाने नहीं देते। ठीक है और रमजान में तो मैं भाई बस गाड़ी ब्लूमिल्टन से चलती थी बस। नहीं ब्लूमिल्टन से जाने में भी अच्छा मस्त तरीका यार 3 साल से थोड़ा लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं रिचर्सन तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर कभी ये भी हो ना कि जी जल्दी है डीएनटी पकड़े तो डीएनटी से अगर मैं रोज तो नहीं जाऊंगा, हाँ। लेकिन कभी को अभी देर हो रहा है, हाँ। डीएनटी पकड़ो सीधा रापा रोड पे और निकले, सीधा रापा पे आप एग्जिट ले लेफ्ट बनाया सीधे वो 25 मिनट के बदल के 25 मिनट। अगर मैं ऑफिस आवर तो 31 मिनट है। अगर मैं रेगुलर डे में हाँ। अभी जाऊँ मैं हाँ। तो डीएनटी में 31 मिनट लगेगा। कोई बात ये रहा। उधर से टोरंटो से भी 2 लोग आए हुए थे ट्रेनिंग पे। अच्छा। तो 2 दिन पार्टी भी चली, काम भी बहुत था। अच्छा। और मैंने उस दिन मैं किसी के गया था तो वहाँ मुझे जवाब मिला, तो मैं जवाब बोला कि भाई करो यार लड़के करो होगा। बोला था हाँ यार यहाँ पर 121 एंड लेगेसी 121 इंडिपेंडेंट पे कोई वो टर्किश रेस्टोरेंट है हुक्का वाला। अच्छा। मैं बोला भाई कर दे भाई, तो फिर आ जाएंगे हम लोग। तो उसको लड़के मैं देखता हूँ, तो फिर अभी मैं इसको याद दिलाता हूँ। आप अभी आज ही याद दिलाया तो कल का वो वहाँ पे आप गेरी डाल देता है। अरे नहीं जानते हो वो है 121 और इंडिपेंडेंट नहीं 120 नहीं, फिर मैं गया था शैलियार के साथ। हाँ टर्की वाला रेस्टोरेंट है वो टर्किश। हाँ तो मुझे दिखाया था, जवाब ने बोला कि अच्छा है। तो वो बड़ा अच्छा था, बड़ा साफ सुथरा था। वो डांस वांस वाला तो साइड पे हाँ, होता है ना, बाहर भी आप बैठ सकते हैं। हम बाहर ही बैठते तो थे। मैंने बोला कि आज वेदर अच्छा है, जैकेट लेके बाहर बैठेंगे और हाँ। आग जलती रहती है। आग जल रही होती है। वो है प्रेस्टन रोड पे। 121 प्रेस्टन पे 120 हाँ वो 120 एग्जैक्टली 121 प्रेस्टन के। क्योंकि उसके ना बिल्कुल सामने है यमी बर्गर। तो वो बच्चों को और खासतौर पर जहीर के बच्चों को बहुत पसंद है यमी बर्गर। तो हम अक्सर ही वहाँ जाते हैं। मेरे तो भाई मेरी बेटी को इतना पसंद है, तो ये वाला यमी बर्गर नहीं है ये प्रेस्टन तो है वही बता। ये वही है ना, उसी मॉल में है ये। वो यमी बर्गर तो हम यार जब भी हम लोग चाहते हैं बच्चे में चलो, बल्कि उसका वो रोटी सर हम आमतौर पर हमें हाँ $13 का आता है हमें भाई, वो जबरदस्त है भाई। तो मैं और वाइफ अभी चंदन पे कहाँ गए हुए थे, कुछ देखने गए थे। हाँ वो नब्रास्का पे गया था। हाँ तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, खाना नहीं है घर। तो घर जाके फिर करेंगे यार अभी इधर से खा लेते हैं। बच्चों का पूछा, वो मेरे 2 साल गए थे घर। तो वहाँ गए वो बहुत ऐसे हम भी से निकल रहे हैं, बच्चे सो गए यमी बर्गर। तो बेटी तो मेरी बोलती बाबा यमी बर्गर, लेकिन मैंने बोला बेटा बेटी अब बड़ी वाली बोलती हमने सब बर्गर खा लिया है, ये यमी बर्गर। अब ऑलिव बर्गर हम 1-2 बार गए हैं। ओनली बर्गर ऑलिव बर्गर वो कहाँ पे? उसका बर्गर यहाँ प्लेटर, यमी बर्गर का बर्गर सस्ता है। 5.99 में रेगुलर बर्गर और 7.99 में प्लेटर। ऑलिव बर्गर में प्लेटर $10 या $11। अच्छा वो है ऑलिव बर्गर, एक रिचर्डसन में है, एक प्लेनो में। अच्छा वहाँ चले जाओ एक बार। ऑलिव बर्गर ओए जबरदस्त बर्गर भाई। आज ये कल जाते ऑलिव बर्गर बच्चों को हम एक बार हम गए थे वो पोर्टो पेरी पेरी जो होता है ना, उसके पोर्ट ऑफ पेरी पेरी के लिए जो रिचर्डसन खुला, हम गए पहले और मैं बहुत लाइन आता मुर्गी खाने के लिए इतना लाइन। चलो भाई क्या देखना है, ऑलिव बर्गर नजदीक, चलो चलते ऑलिव बर्गर। ऑलिव फर्स्ट टाइम कहते हैं खाया गुड बर्गर। तो पिछले वीक मेरा एक नया एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे कोई है ट्रैम्पोलिन पार्क। हाँ हाँ मुझे नहीं था उसका पता। तो कोई मुसलमान है ना, उनका है ना, ये नहीं मुझे पता। अच्छा कोई दूसरा और समझ गया यहीं पर ये बिल्कुल सामने। करेक्ट हम जा चुके हैं। अच्छा तो ये बच्चे जो सबसे दोनों छोटे हैं ना, मेरा छोटा और जहीर का छोटा, ये कहते हैं वहाँ जाना। मैं कहता अच्छा बेटा देखते हैं। तो पीछे बढ़ गए। आपने कहा था चलो, मैंने कब कहा था। अच्छा मैं कहा चलो 7 बजे चलते हैं, 7 बजे के करीब चलेंगे। मैं कहीं वॉशरूम में था, तो मैं 7 बज गए, मैं बाहर निकला तो मैं बाहर बैठा मैं तुम्हें क्या हुआ, चलो पार्क वो मैं भाई। अच्छा उनका मैंने टाइम देखा, वो फ्राइडे और सैटरडे को 11 बजे बंद होता। तो 7 बजे से तो मैंने कहा 4 घंटे में तो आधा घंटा भी नहीं चल किया जाना कुछ वहाँ पे। तो वहाँ चले गए, तो सभी चले गए, सिर्फ एक नहीं गया, बाकी चारों चले गए। तो वहाँ जाके बहुत गाड़ी, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हाँ बहुत भीड़ होती है।
तो मैंने कहा ये वो आधे बच्चे कहने नहीं जाने की जरूरत ही नहीं बाबा, इतना रश हो गई है। मैंने कहा यार अब यहाँ आ गए हैं ना, मैंने भी सोचा, मैंने कहा अब आ गए हैं ना तो अंदर कम से कम जाना चाहिए। अंदर जाके अगर हुआ कि तो फायदा ही कोई नहीं, फिर चले जाएंगे, लेकिन बाहर से बाहर जाना नहीं चाहिए। फिर अंदर गए तो पता चला इनके ना वो मेंबरशिप भी देते हैं, 690 या $60 की है। उस पर आपको आप बर्थडे वगैरह शायद फ्री कर सकते होंगे, मुझे पता नहीं है। हमने एक बार लिया था, ग्रुपॉन में इनका कूपन आया था, $200 का कार्ड, $100 कार्ड वो किसी से, वो जो गिफ्ट इनका जो इनका जो होता है ना, जो गिफ्ट कार्ड। अच्छा अच्छा उसका कार्ड भी होता है। तो वाइफ ने $100 में $200 को उठा लिया। ठीक है, तो खत्म नहीं हुए भाई, खत्म ही नहीं हुआ। आखिर में वो भाई वो परवेश के बच्चे उन लोगों को दो तीन बार ले गए, खत्म करवाया, खत्म करो भाई, खत्म हो जाएगा। अच्छा उसकी कोई ड्यूरेशन होती, और ड्यूरेशन थी उसकी कार्ड की, वो गिफ्ट कार्ड उस टाइप के ना, वो कैश कार्ड नहीं था उसका। अच्छा वो होगा कि इस टाइम में अनलिमिटेड टाइम आ जाए, साल भर में। हाँ $200 का आप यूज कर सकते हैं। सही है। कितना जाएगा आदमी यार। लेकिन मैंने वाइफ ने ले लिया कि $100 मिल रहा है, 200 का तो डबल हो गया। हाँ तो हमने फिर आकर उसको पूरा यूटिलाइज। वो तो खैर हम तो एक दफा में ही $75 बन गया था। हाँ तो तुम्हारे लिए अच्छा है वो। हाँ अच्छा खैर वो अंदर गया तो मैंने देखा तो 3 बर्थडे चल रही थी, 3 या 4, तो मैंने कहा तो इनका रश है ना। तो मैंने पूछा अच्छा फिर उनके 2-3 वो टीयर्स हैं। अच्छा मैंने देखा उसमें फर्क क्या है, तो वो जो $13 का था और जो $25 जो हाफ प्राइस था, वो अंदर पूरा गेम है उसमें। वो सिर्फ वो ऊपर वाला वो जो था ना बंदर वाला, उसमें वही फर्क एक मेन फर्क था उसमें। उसका फुल वाले में आप उसमें जा सकते, उसमें जाते थे ना, अब मोजे मिल जाते हैं। हाँ मोजे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ये करना होगा तो नहीं, हमने तो बस ठीक है फिर नीचे और कूद जाए। हाँ वो कूदने वाले में भी 3 या 4 थी जिसमें जा सकते थे, वो लिया 7:30 शुरू हो गए होंगे, मेरा ख्याल 11:30 इनको पकड़ के निकाला हुआ कि चलो भाई हो गया टाइम। वहां पे हटे ना, तो कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, मैं बैठा मैं बंदर बन गया। सही है, मैं देखो कि इसको कॉल करूँ, एक कनाडा से एक की कॉल है, यार मैंने ये एक चीज है मुझे पढ़ा दो, मैं करो कॉल, मुझे कॉल करो अभी टाइम है, मैं पढ़ा दूंगा अभी करो। तो उसको कराया, अब्बू की कॉल आ रही है, उनको जबरदस्ती में वीडियो कॉल करना, वो आता ऑस्ट्रेलिया। ओ भाई भाइयों के पास तो चाबी तो होती है, प्लीज लॉक हो जाता है। अच्छा लॉक हो जाता है। तो वो फिर करते कराते बड़ी मुश्किल से तो वहां से निकले ना, घर पहुंचते ही एक इधर गिर रहा है, एक उधर गिर रहा है, चलो सब खाना खाओ, मैं नींद आ रही है, मैं कभी खाना खाओ। हाँ। फिर नेक्स्ट डे सुबह एक है मेरे यहाँ दर्द हो रही है, ये तो फिर हम उस दिन वहाँ भी गए थे, वो वहीं पर फ्रेटा इनफ्रेटा है ना, इनफ्रेटा एक इटालियन नाम सुना। हाँ इनफ्रेटा खुला, तो हम गए थे, तो हम लोग चलो देखते हैं इनफ्रेटा में खा लेते हैं। तो थोड़ा महंगा है, अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, वो इटालियन टाइप का। बच्चों को मेरे हमने ऑल मीट पिज़्ज़ा लिया, भाई ऑल मीट पिज़्ज़ा, ओह माय गॉड, उसमें वो पेपरोनी और सॉसेज वगैरह सब कड़ा हुआ, वो सब था। मैंने सैंडविच ली, वाइफ ने सैंडविच ली और सब लिया। तो ये बच्चों हाँ फिर कब जाएंगे हम लोग, पास्ता कौन खाएगा। तो अभी तो आजकल तो हमने बोला कि तो रुक जाओ, खाता हर वीक में ना थोड़ा मुश्किल आता है खाता है। तो अच्छा ऑलिव बर्गर अच्छा है, और भी है, और भी रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। एक ये आपने ट्राई किया ये जिससे पकड़ा हुआ? हाँ मैं किया। अच्छा एक बार हम निकल गए थे, तो कैरोप्रैक्टर के बाद वाइफ गई थी, तो भूख लगी, हमने हम भी प्रैक्टर देखते पूछे, वेजिटेरियन पूछा, बोला हाँ हलाल है। तो हमने लिया था एक प्लेटर, वाइफ ने सैंडविच ली थी, तो ठीक ही लगा। तो ये तो यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ना ये लोग। हाँ तो वही मैं देखना चाहता था, बफे का अच्छा है, देखो भैया कितना बासमती राइस ट्रे 1520 यूरो, एंटीबायोटिक एंड हार्मोन फ्री चिकन ट्रे इंक्लूडिंग एथनॉस ऑफ तज़की सॉस 1500। तो बहुत ही अच्छा है भाई, बीफ गैरो ट्रे मेड विद ग्रिल्ड अनियन इन तज़की 15 से 20 पीपल।
तो बीफ का तुम कबाब लेने जाओ, लेकिन $100 का नहीं देगा बीफ का। चलो फलाफिल 50 पनीर सॉस के साथ। और फिर चलो वार्म लेंटिल ट्रे, पोटैटो स्टू, इधर तो वो सब हमस, रेड पेपर हमस $40 ट्रे होगा। हाँ तो ट्रे होगा वो, हाँ ये सारे ट्रेज हैं। हाँ, तो ये हमने इतना ज़्यादा क्या है ना, केटरिंग सर्विस फी 20% इंक्लूडिंग ऑल यूटेंसिल्स, ओह शेफिंग रैक, स्टर्ट नोज एंड डिलीवरी विद इन 5 मिनट्स। हमारा तो कुछ नहीं है, मेरा भी। तो ये अच्छा है भाई, चिकन ये $50 का ट्रे, ये ट्रे देखो ये लगाया मैंने। हाँ लेकिन ये तो हम तो अगर 4-5 लोग हो तो हम क्या करें फिर? तो 4-5 लोग का बहुत कुछ, तो फिर ये ये छोटी होंगी ना, फिर प्लेटर्स होंगे। ये लेना। हाँ फिर ये मैंने लिया था। अच्छा ये $10 का, ये $8। अच्छा, ये जो है ये गायरो वगैरह है? हाँ ये एक देखो ना, चिकन बीफ फलाफल, और ये है चिकन ले लें या बीफ गैरो ले, या काफ्ता ले लें या फलाफल। ये काफ्ता हो गया, ये चिकन का हो गया, ये फिर इसका फलाफल का हो गया। अब चावल ले लें या सैलड ले लें या कुछ ले लें। तो माल है यार, ये जो घर से मतलब तुम्हारे पास तो एक माल पत्थर फेंक के हर तो पहुंच इधर जाएगा। या तो हम इस बार गए थे, तो वो हम थोड़ा शाम में गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो उन्होंने खत्म हो गया था। मतलब सामान क्या, हमने देखा भाई कुछ है नहीं, इतना खाली क्यों हो रहा है अंदर। हाँ उन्होंने सब तो निकल गए। ये बड़े अच्छे, वैसे भी यहाँ से इनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा है ना। हाँ ये बड़े अच्छे हैं लोग। अच्छा भाई हैं शायद तो। हाँ, 2 भाई से कुछ है। तो हाँ तो वो और दूसरा ये
है।